Hi everyone, welcome to LeapScholar YouTube channel. Hope you are doing good. We have a special guest all the way from UK who has mentored thousands of students aspiring to go abroad for their higher education. Before we start off, if you haven't already subscribed to our channel, subscribe now. We have with us today Rajeev Sangwan, who is a Hi data guys. scientist, who is a data scientist in UK, and we will be discussing sandwich degrees in the UK. So let's get started. So I'll go ahead with first question to you, Rajeev. Rajeev, can you just walk us through a little through what exactly are sandwich degrees? And if you did it yourself, what made you choose it? सैंडविच डिग्री की अगर हम बात करें तो सैंडविच डिग्री इज समथिंग इज अ प्लेसमेंट ईयर यू कैन से। मगर आपकी डिग्री 3 साल की है तो 2 साल आप पढ़ाई करते हो एंड देन थर्ड ईयर इज योर सैंडविच डिग्री और प्रॉब्ली इट्स योर डिग्री इज फॉर 3 years, प्रॉब्ली यू स्टडी फॉर फर्स्ट ईयर एंड देन यू डू अ जॉब प्लेसमेंट और do any work within that year, and then third year you come back to the university and do your studies. Personally, I haven't enrolled for the sandwich degree. The reason being because my degree was I came here for masters. So मेरी जो masters थी वो 1 साल की थी, तो उसमें मैंने ऑप्ट नहीं किया था सैंडविच डिग्री वाला। द रीजन क्योंकि ऑप्शन नहीं था जिस यूनिवर्सिटी से मैंने किया था। अगर मुझे इतना पता होता जितना कि आजकल जितनी अवेयरनेस है नॉलेज है तो देन डेफिनेटली आई वुड हैव चूजन द सैंडविच डिग्री। All right, all right. And which industry? So, like you said that sandwich degree आप choose करते, it's very nice. So, uh, are there specific industries जिसके लिए sandwich degrees choose करनी चाहिए? Like which industries, according to you, you think better suited for sandwich degrees graduation and and should people with no experience should pursue it, or people with work experience should pursue it? ऐसा कुछ preference है या what would you suggest? अगर हम इंडस्ट्री की बात करें कि भाई कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें अगर आप काम करना चाहते हो इन फ्यूचर में, या कौन सी ऐसी पढ़ाई करने के लिए आप जा रहे हो स्पेसिफिक डिग्रीज कि उसमें सैंडविच ईयर हमें चूज करना चाहिए, तो ऐसा पर्सनली आई थिंक ऐसा कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री नहीं कैटेगराइज कर सकते हम। रीजन बीइंग कि सैंडविच ईयर अगर आप करते हो, मतलब कोई भी अगर प्लेसमेंट ईयर ले रहे हो किसी भी वेदर अगर आप मार्केटिंग में कर रहे हो कुछ, या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कर रहे हो, या फिर अगर आप नर्सिंग करने के लिए आए हो, या फिर डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड कुछ करने के लिए आए हो, तो सब में अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई कई इंडस्ट्री में जाके काम करने की, वहां पे एक्सपीरियंस लेने की, तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी हेल्पफुल। वेदर कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी फील्ड हो, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि भाई आपको लेनी चाहिए अपॉर्चुनिटी। ठीक है, उसका बेनिफिट बहुत होता है, और जो आपको जब आप अपने डिग्री को कंप्लीट करते हो उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि भाई वहां से आपने क्या सीखा, आपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जो लिया वो किस तरह से आपको हेल्प कर सकता है। अब बात आती है कि वर्क एक्सपीरियंस, अगर जिन लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस है क्या उनको सैंडविच डिग्री ऑप्ट करनी चाहिए, तो अगर यहाँ पे आप मुझसे पूछोगे तो डेफिनेटली इट वुड हेल्प देम अ लॉट। रीजन व्हाई आई एम सेइंग दैट कि भाई अगर किसी के पास वर्क एक्सपीरियंस है फॉर एग्जांपल, एंड उसके बाद वो डिग्री करने के लिए आते हैं 2 साल की एमबीए फॉर एग्जांपल, तो एक एक साल का एमबीए का भाई उनकी पढ़ाई है, एंड देन इट्स अ प्लेसमेंट ईयर एंड देन दे कैन अप्लाई फॉर पीएसडब्ल्यू वॉट एवर इट इज। तो जब वो ऑलरेडी दे हैव अ 4 year 5 years वर्क एक्सपीरियंस, they completed their first year, and then obviously they get a chance to work within an industry. Obviously they have a knowledge, they have a कि भाई पहले उन्होंने काम किया हुआ है, और अब क्या होगा कि भाई उनको उस सैंडविच ईयर में मौका मिलेगा अपने नेटवर्क्स बनाने का, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाने का, बिजनेस को अंडरस्टैंड करने का। दे हैव एक्सपीरियंस, दे वांट टू क्रिएट देयर नेटवर्क्स। उसके बाद क्या होता है कि भाई आपको जॉब मिलने की जो पॉसिबिलिटी है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो बेटर हो जाती है, और आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है वंस यू कंप्लीट योर डिग्री टू फाइंड अ सुटेबल जॉब अकॉर्डिंग टू योर फील्ड। Correct, correct, correct. Before we move on to the next question, students, अगर आपको स्टडी अब्रॉड जर्नी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे दिखाया गया क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना फ्री काउंसलिंग बुक कीजिए एक्सपर्ट काउंसलर के साथ. So moving on to Rajiv. So Rajiv, next question is, given your experience, can you suggest a few tips to find work placement during the sandwich degree? And what should the students be ideally looking for during the work experience while they're choosing job opportunities while pursuing the degree? Okay, and that's a very good question, and I think this is one of the most important questions which students should be asking। अगर किसी से वो गाइडेंस ले रहे हैं या किसी से वो
पूछ रहे हैं कि भाई वो क्या कर सकते हैं, किस तरह से जॉब फाइंड कर सकते हैं, जॉब हंटिंग अगर हम ये बात कहेंगे कि प्लेसमेंट ईयर में भी अगर आप काम करते हो तो दैट्स जॉब हंटिंग। तो इसमें जो मैं पर्सनली स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, मैं जो मुझे लगता है कि भाई स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो जैसे ही वो डिग्री अपनी करने के लिए आते हैं, द डे दे स्टार्ट देयर डिग्री, ये नहीं कि उनको दे हैव टू वेट कि भाई एक साल जब मेरा कंप्लीट होगा या मेरी 9 मंथ्स जब मेरे लास्ट के एक दो असाइनमेंट बचेंगे तब मैं जॉब ढूंढना शुरू करूंगा। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। व्हाट दे नीड टू डू, पहले से ही अपने सीवी के ऊपर काम करो। सीवी को जिस तरह से भी मॉडिफाई करना है, जो भी आप डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स ढूंढ रहे हो, जो भी मार्केट में प्लेसमेंट से रिलेटेड जॉब्स अवेलेबल है, उनको अगर आप जो अप्लाई करते हो प्लेसमेंट जॉब्स को, या सैंडविच ईयर के टाइम पे जो आप उन जॉब्स को अप्लाई कर रहे हो, तो मेक द चेंजेस into your CV as per the job description। उसके साथ साथ क्या है, कोल्ड ईमेलिंग, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज क्या होती हैं जॉब एडवर्टाइज नहीं करती। एडवर्टाइज क्या होता है कि भाई ठीक है अभी मेरे पास हैं बंदे, तो मेरे पास नहीं है अवेलेबिलिटी की जॉब की, लेकिन अगर आप उनको ईमेल करते हो, कोल्ड ईमेलिंग इज समथिंग दैट यू राइट डाउन एन ईमेल एंड सेंड देम, ओके दिस इज माय व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस एंड, या फिर एक्सपीरियंस नहीं है तब भी ये लिखो कि भाई मैं ये पढ़ रहा हूँ और मेरे को ये मेरी स्किल्स हैं एंड आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी अपने प्लेसमेंट ईयर के टाइम पे, एंड डू यू हैव एनी वैकेंसी और डू यू हैव एनी अपॉर्चुनिटी देयर। सो उसमें क्या होता है कि योर ईमेल goes to them, they look into it, might they don't have the opportunity right now, but अगर कभी भी फ्यूचर में उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है, कोई छोड़ता है, तो तुरंत की तुरंत दे नो समवन जिसको बुला सकते हो इंटरव्यू के लिए। और उनके लिए भी फायदा ये होता है एम्प्लॉयर के लिए, दे डोंट हैव टू पे टू द एजेंसीज कि भाई जो ये कि भाई अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई बंदा ढूंढना है, कोई एम्प्लॉय ढूंढना है, तो उसके लिए दे डोंट हैव टू गो टू द एजेंसीज, एंड व्हाट दे कैन डू स्ट्रेट अवे दे कैन रीच आउट टू दैट पर्सन हु सेंट दैट ईमेल। सो इसमें कोल्ड ईमेलिंग बहुत काम करता है। और दूसरा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करते रहो। ये नहीं कि पहले दिन आए आप, ठीक है आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी बेटर नहीं है और आप सोचो कि अभी करेंगे काम, जब अप्लाई करेंगे जब काम करेंगे, नहीं, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फर्स्ट, वो कीप वर्किंग हार्ड ऑन इट, एंड जब ऑब्वियसली जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब इंटरव्यू आएगा, तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो गए उस चीज के लिए। सो दीज आर माय सजेशंस कि भाई कीप वर्किंग हार्ड, कीप लुकिंग आउट फॉर द जॉब्स फ्रॉम द डे वन, क्योंकि उसमें कुछ नहीं जाता। अगर डेली के 2-3 जॉब भी अप्लाई करोगे, आपका कुछ नहीं 10-15 मिनट लगने हैं, लेकिन आपकी जो अपॉर्चुनिटी है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो काफी बढ़ जाती है। Correct, correct, correct. And since the pandemic has come, Rajeev, things have changed. Job opportunities and the way we look at industries, everything has changed. So post-pandemic, how do you see that businesses have changed, and do you feel that sandwich degrees have become even more relevant? And having said that, what are the top benefits of sandwich degree? Maybe pandemic or not, what are the top benefits you feel that sandwich degrees have, and post pandemic especially businesses कैसे change हुए हैं, has they become more relevant than these kind of degrees? Can you suggest, like, can you speak on ओके, that? अगर हम पैंडेमिक के बारे में बात करें कि भाई पैंडेमिक ने व्हाट चेंजेस इट ब्रिंग टू द होल बिजनेस और प्रोफेशनल लाइफ टू द इंडिविजुअल्स। सो ये है कि भाई पहले वर्क फ्रॉम होम कल्चर थोड़ा कम था, ऑब्वियसली आईटी इंडस्ट्री में तो काफी था, मतलब, और दूसरी इंडस्ट्रीज में इतना नहीं था, लेकिन अब क्या है आफ्टर पैंडेमिक, ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर इट्स इज ब्रॉडली, तो हर Hmm. इंडस्ट्री में इट हैज बीन अडॉप्टेड एंड इस पे, और इंडस्ट्रीज हैप्पी भी हैं कि भाई हाँ ठीक है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उनके एम्प्लॉयज की, दे हैव बीन इम्प्रूव्ड व्हाइल दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, दे कैन। एंड सो इसमें क्या हुआ है कि अब अगर हम बात करते हैं कि ऐसी चीज में कि सैंडविच डिग्री अब करनी पेंडेमिक के बाद बेनिफिशियल है या उससे पहले बेनिफिशियल थी, तो मैं ये कहूंगा कि बेनिफिशियल तो पहले भी थी और अभी भी है। अब क्या है इसका फायदा कि भाई अब आपको, पहले क्या होता था कि भाई कई लोगों में इस तरह की हेजिटेशन होती थी कि भाई दे वो किसी के सामने बैठ के अगर कोई इंटरव्यू देते, अब क्या है मोस्टली इंटरव्यूज जो होते हैं जूम के थ्रू होते हैं। पहले क्या होते थे कि ऑब्वियसली फेस टू फेस होते थे, तो ये थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि आप अपनी स्क्रीन के सामने बैठे हो, आपके सामने कोई नहीं बैठा, तो यू फील लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंट। दिस इज व्हाट माय पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल थॉट कि भाई ऐसा फील होता है, क्योंकि आप एक 4 लोगों के सामने एक रूम में बैठे हो और एक आप स्क्रीन के सामने बैठे हो, चाहे वो 4 बैठे हो उस तरफ 5 बैठे हो, तो यू फील मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है, दूसरा क्या है कि भाई अगर आप सब सैंडविच ईयर करते हो, तो बेनिफिट तो पहले भी उतना ही था और अब भी उतना ही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पेंडेमिक के बाद उसके बेनिफिट बढ़ गए या घट गए, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि आपका जो अपॉर्चुनिटी है घर से काम करने की, इस तरह की इंडस्ट्रीज हैं वहां पे, आपको अब ये नहीं है कि भाई आपको, अगर आप लंदन में बेस्ड हो, लंदन में आपने डिग्री करी है, तो अगर आपको आपकी प्लेसमेंट जो सैंडविच ईयर टाइम में आपको जो जॉब मिल रही है वो स्कॉटलैंड में मिल रही है, सो आप वो नहीं कर पाओगे। यू कैन अप्लाई फॉर अ जॉब एनीवेयर
इन द वर्ल्ड। इवन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जिनकी यहाँ पे हैं, वो यूके में है, लेकिन उनकी जो प्लेसमेंट ईयर कर रहे हैं वो बाहर से, मतलब किसी दूसरी कंट्री से, यूरोप की। क्यों? क्योंकि आजकल आपको वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो पेंडेमिक के बाद आया है, उसकी उसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो मुझे लगता है। तो आप कहीं पे भी रहकर कहीं की भी जॉब को अप्लाई कर सकते हो। सो दैट्स अ गुड पार्ट। Thank you, Rajiv. That's very insightful. And we have our users asking too many questions to you. I think, and we'll take some questions. So one question Okay. is May 2023 intake available for those plus two students who have passed in 21-22? Okay. I think yeah, May 23. If अगर 21 22, if you I believe that's true. अगर आपने अपनी डिग्री को कंप्लीट कर दिया है या आपने अपनी स्कूलिंग को कंप्लीट किया है, और अगर आप May 23 में आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो आई थिंक यू कैन अप्लाई। आई डोंट सी व्हाई नॉट। Correct, correct. 1 second. I think my camera has some बट issues. बट इसमें बस एक जो हो सकता है कंसर्न, दैट माइट बी दैट मे 20, अगर आप मे बैच में जब अप्लाई करते हो, सो यू डोंट हैव दैट मेनी ऑप्शंस विद द यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज Right. होती हैं जिनके पास मे इनटेक होता ही नहीं है। तो सितंबर इनटेक और काइंड ऑफ जैन जैन इनटेक जो है मोस्टली यूनिवर्सिटी अडॉप्ट करती हैं, तो मे इनटेक कुछ यूनिवर्सिटीज अडॉप्ट करती हैं। सो दैट कुड बी वन कंसर्न। अदर देन दैट आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई यू कैन नॉट अप्लाई। All right. And we have four questions that, sandwich in masters in mechatronics or in mechanical. What is better? सॉरी, मैकेनिकल एंड And mechatronics. I'm hearing this for the first time. So, yeah. mechatronics. Sorry, I think I'm. They might say masters in electronics. Probably they mean that, or mechanical. So if that's you asking about electronics, then both are good. I think it's really difficult to pick one out, that mechanical is good or electronics is good, because both are equally good, and it's depend on what's your background and what's your interest, and and what sort of a university you are picking on the basis of the modules. So you have to look through the modules, means what sort of modules they are offering, and specifically you need to see whether these modules are really relevant within the industry right now or not, because some universities they are offering some sort of modules which are not in relevance with the current industry or current market trend. So you need to check that कि भाई अगर जो अभी मार्केट ट्रेंड चल रहा है और उसी से रिलेटेड वो मॉड्यूल्स होने चाहिए। सो both are good, mechanical and electronics. It's really difficult to pick one out. Right, right. And do you have any top courses that are, new courses in related to sandwich degrees that you can suggest to our users? Do you have any top courses in your mind to suggest, maybe top uh, skills or uh, anything? I think what we can see, the big trend right now, it's data analytics and business analytics or data science. If you are doing something in relation to that industry, then definitely there is a boom, and there's more chances you to find the placement here or placement jobs, or so that's one of the industries which I always say. Cybersecurity is one of the so these are the IT sort of thing. Other than that, what I suggest is choose the degree or choose the courses on the basis of what's your interest, because after 12th, if you are choosing, then definitely if you have done something related to maths, something related to stats, something related to IT, then definitely you can think around data analytics, cyber security, software engineering, these kind of things. But if you have done something related to bio, then I would suggest biotechnology is one of the most demanding or most growing field right now. The reason, thanks to pandemic, because biotechnology analytics is in boom as well, because they are looking for a lot of data analytics or data science professionals who can work into the biotech industry. If you already have a degree in biotech, biology, something, and if you integrate that within the data science or data analytics, some sort of degree, then definitely it will become a great combination which will fetch you a very interesting jobs in future. Right. And Rajiv, we also have some questions from our users asking, other degrees are relevant for sandwich or not, like maybe non-science degrees, maybe psychology and other degrees. Do they make sense? Uh, and psychology, personally,
अगर मैं सच बोलूं तो साइकोलॉजी मुझे हमेशा से लगता है यार इस सब्जेक्ट में पढ़ते क्या होंगे, मतलब मैं ये कह रहा हूँ दे माइट बी अवेलेबिलिटी और साइकोलॉजी से, अगर मैंने फिर बाद में उसके रियलाइज किया कि भाई अगर आप साइकोलॉजी वगैरह से या सोशियोलॉजी से डिग्री करके आप आगे फ्यूचर में किस तरह की जॉब्स करते हो, तो वर्ल्ड हेल्थ फॉर्म्स, दीज काइंड ऑफ जनरली कंपनीज होती हैं जो हेल्थ से रिलेटेड उस इंडस्ट्री में आप जाते हो. सो यू कैन थिंक अबाउट इट. I'm not 100% sure around that industry, to be honest, and so therefore you can do a little bit more research around it, and then you might find your answers whether it's helpful or not, and what sort of a job availability are there within the market. If we talk about the supply chain management, on the other hand, supply chain management is one of the good courses where you can opt for if you are getting a chance to get a placement year within that degree, then definitely it will help you. If we talk about the civil engineering, then definitely if you're doing first year as a studies, उसके बाद second year में आपने placement किया, third year में आपने पढ़ाई करी, तो definitely it will help you a lot, trust me. Because civil engineering, you do something, you learning something, and then you apply that thing, and then again you are studying, and then you can go back to the same company. So specifically अगर psychology की बात करें तो you do a little bit more research around it, because I'm not that 100% sure about that industry. All right. Okay. Thanks, Rajiv. And another question is, so a user wants to understand the scope of masters in project management plus international business. Top of master in international business and sorry, So scope of masters in project management plus international business. so is it the same degree? Means international business and project management. Is it the same degree which is covering these two fields? Looks like me there might be specialization in international business in project management degree. Not sure, but our viewer Okay, wants to understand about the scope okay, of, I think, these two combinations. okay. If you are asking, means if you have to choose one of them, then personally I would suggest project management is have a better chances or better future prospects than international business, because international business is quite a broad term. When you have something quite broad, it's really difficult to specialize in something. Now if we talk about the project management, obviously you specialized in something, you will learn some skills like agile and prince 2. These are the different terms which you will learn, or these are different softwares which you will learn within the project management. So you have specialized yourself into something, so you are professional now. Within international business, you are learning marketing, sales, and all those kind of things. If you already have a business background, if you are thinking to start a business or something, then definitely it will help you, it will guide you. So if you are getting both in the same degree, then definitely you can opt for. And if you are asking me what sort of modules you can choose, when you are choosing the elective modules, then definitely you can go around more towards project management side. So have a understanding around international business, but go more detailed for the project management. That would definitely help you, trust me. All right, Rajiv. Thank you so much. Thanks for your insight for this insightful session and for our users. We will soon be back with more such videos. Until then, if you have any questions, you can ask them in the comment section below. And if you want to know more Thank you. about studying abroad and want a free counseling session, then scan the QR code on your screens or click the link in the description below. Thank you so much for joining today. Thank you, Rashi. Thank you for having me. Thank you everyone for joining in.